Welcome back to MathsVaani. So, I have this challenge for you that sounds impossible at first. But trust me, by the end of this video, you will be solving these like a secret agent cracking codes. Yes, you heard that right. These are cryptarithms. So, cryptarithms is basically a mathematical puzzle. It's not a riddle, okay? And इस साल क्लास 8 के 5th चैप्टर में नंबर प्ले में एनसीईआरटी ने स्पेशली क्रिप्टा अर्थमेटिक के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी है. सो हेयर इज़ द थिंग, द सोल्यूशन इज़ हाइडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम अबाउट टू शो यू एग्जैक्टली कि हम इसकी सोल्यूशन कुछ सिंपल थोड़े से स्टेप्स में कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू बिकम क्रिप्टारिथम मास्टर and impress your friends with your math superpowers, hit that like button, subscribe, and let's crack this code together. Let's go. So, I'm going to break down the logic behind solving cryptarithmetics, and these are just 5 rules you have to remember. That each of these alphabets represent exactly one digit. That means 0, 1, 2, 3, or 9. And same alphabet has to be the same digit. That means if I'm taking A as 5 over here, then A will be 5 over here as well. ये नहीं कि यहाँ पर 5 ले लिया और यहाँ 4. सेकेंड थिंग, जो पहला डिजिट होता है उसको हम 0 कभी नहीं ले सकते. एंड व्हाट इज योर जॉब? योर जॉब इज टू फाइंड विच डिजिट ईच लेटर रिप्रेजेंट्स टू मेक द ऑपरेशन ट्रू. मतलब यहाँ पर हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है. सो लेट अस सी. फर्स्ट, this is a 2-digit number, this is a 1-digit number, and this is a 3-digit number. So I am writing this 2-digit number as tens plus ones, मतलब 10 into E plus F. Now हमने इसको मल्टीप्लाई किया E से, बिकॉज इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट करा एज अ प्लेस वैल्यू. अब जब हम E से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन गया 10E² प्लस EF, और इसको इक्वल किसके होना है? ट्रिपल जी के. सो ट्रिपल जी में इफ आई टेक जी कॉमन, आई एम लेफ्ट विद ट्रिपल वन. सो ये हमारा एंड रिजल्ट होने वाला है. अब लेट अस सी, हम कुछ हिट एंड ट्रायल करते हैं. अगर हम ई को 1 ले, 0 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ये फर्स्ट डिजिट है. सो विल स्टार्ट विद 1. इफ आई टेक दैट एज 1, देन 10 प्लस एफ विल बिकम 2-digit नंबर. 10 प्लस एफ, बिकॉज अगर यहाँ 1 लगाते हैं तो ये बन जाएगा 10 प्लस एफ, और वो एक 2-digit नंबर है. बट हमारा आंसर 3-digit नंबर है. दैट मीन्स ई कैनॉट बी 1. इफ आई टेक ई एज 2, देन व्हाट विल इट बिकम? 2 स्क्वायर इज 4, 4 टेन्स आर 40, 40 प्लस 2f. अब 40 प्लस 2f भी एक 2-digit नंबर होगा, और ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? लेट अस से मैं f का सबसे बड़ा नंबर लेती हूँ 9. तो 10 प्लस 9 19 हुआ. सो मैक्सिमम ये 2-digit नंबर है. यहाँ पर भी अगर मैं 9 लेती हूँ तो 2 9s are 18. So 40 plus 18 is again a 2-digit number, but that's not matching with what I desire. So let me try with 3. Now 3f can be a 3-digit number, right? 3f can be. मतलब अगर हम f को 1 ले लें तो नहीं, but 2 से 3 2s are 6, 96 भी नहीं. 3 3s are 9, 99 भी नहीं. लेकिन f को अगर हम 4 लेते हैं, 4, अगर हम f को 4 लेते हैं तो ये बनेगा 90 प्लस 3 इंटू 4 12, विच इज 102. बट 102 कैन नॉट बी रिटन एज समथिंग इंटू 111. सो दैट मीन्स दिस वॉज अ बैड आइडिया. सो लेट अस ट्राई अनदर वन. इफ आई टेक f एज 5, so 3 5s are 15. 90 plus 15 is 105, which cannot be again written like this. If I take 6, then it becomes 108. Because 6 3s are 18, so 90 plus 18. This again is not fitting. However, when I take 7, I get 90 plus 21. 3 7s are 21. Now I'm getting 111. And 111 can be written as 1 into 111, which is fitting this particular pattern that is desired by us, which implies your final answer is that your value of E is 3, value of f is 7, and when you multiply 37 by 3, because यहाँ पर भी E है, your answer is 111,
So G value is 1. So over here, basically, you need to practice. So practice a lot of cryptarithms examples to get this hack. You know what they say? Mathematics is the only place जब किसी को मजाक उड़ाना होता है maths का. Mathematics is the only place where people buy hundreds of watermelons just to find the one that's perfect. But with cryptarithmetics, you are basically a digital detective, solving crimes with numbers instead of fingerprints. Thank you.